Hey, so if you watched my post market on Friday, so basically I didn't really buy on Friday. I mentioned this. Why did I not buy? Because I wanted this to break 43,735. Why? Because that was the candle low of the candle which initiated this buy. So that broke today, and I had mentioned this. If this breaks, I'll look for this buying opportunity with keeping this as stop loss. So I did some scalping here. I had to come out, but it did. When this broke, it was around 730, and it went till 900. But I couldn't really capture this because at 12 o'clock I had shared a system trade where I was short on Nifty, so did not really want to go against that system. So came out quickly with some scalping, but watch my Friday's post market and then look at this, and then you will understand that why this was a very good scalping opportunity here, especially when Nifty was so bearish today. What was a trade? System trade. I had shared this around 12 o'clock in all social channels. Sell below 12.15. Stop loss VWAP. Trail your stop loss. So basically wanted low to break first. Once low break happened, I was trailing my stop loss by keeping previous low as previous high as stop loss. So this candle broke low, and here my trading stop loss got out. Let's see. I'm not really interested in terms of 1 hour. Not really interested in buying and selling. I don't really like the close right now for both. So I'll probably look for selling opportunities below 18,670 in Nifty spot 1 hour. If a candle closes below that, I'll look for selling opportunities. Till then I'm not, and I don't really want to buy this. Same goes for Bank Nifty. If tomorrow Bank Nifty breaks to Friday's low, I'll look for selling opportunities. Till then I'm not really interested in selling this. थैंक यू. तो अगर आपने मेरा फ्राइडे का पोस्ट मार्केट देखा है तो मैंने फ्राइडे का मेरा पोस्ट मार्केट वीडियो का बैनर ये था कि मैंने क्यों नहीं बाई किया इस मूव को. तो आज एक्चुअली अगर आप देखें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स बाइंग मिला है 2 बार, लेकिन मैंने जैसे ये टूटा मैंने बाई किया था, लेकिन मेरे को निकलना पड़ा जल्दी क्योंकि मेरे सिस्टम ट्रेड में 12 बजे के आसपास मैंने एक सिस्टम ट्रेड शेयर किया था जिसमें मैं निफ्टी में शॉर्ट था, तो मेरे को उसके अगेंस्ट जाना नहीं था. और तो भी जब निफ्टी शॉर्ट थी तो भी इसने ऑलमोस्ट इस ब्रेक पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स दिए यहाँ से. और फिर जब यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था 650 से ऑलमोस्ट 850 205 पॉइंट्स फिर से दिए. स्टॉप लॉस था डे लो. तो ये 2 ट्रेड्स थे जो मैंने फ्राइडे के पोस्ट मार्केट में डिस्कस किए हैं, आप जाके देख सकते हैं. निफ्टी में सिस्टम ट्रेड ये तो मैंने शेयर करता ही हूँ. 12 o'clock शेयर किया था मैंने सब चैनल्स पे, यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर पे. तो बेसिकली था 12.15 के नीचे सेल, स्टॉप लॉस रहेगा VWAP, और ट्रेल करने के लिए बोला था स्टॉप लॉस टारगेट के लिए. तो जैसे ही लो टूटा, प्रीवियस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस हो जाता है. इस कैंडल ने तोड़ा लो, तो मैं यहाँ पर मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया. अब क्लोजिंग तो मेरे को दोनों में अच्छी नहीं लग रही, पर देखूंगा जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता निफ्टी 18,670 के नीचे, और बैंक निफ्टी जब तक फ्राइडे का लो नहीं तोड़ता तब तक तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेलिंग में. तो देखते हैं. थैंक यू.